Okay, great. Jai Hind, all of you. Very good evening. So here we are with our sixth revision class. ठीक है. हमारे आज के revision class में we are going to cover two topics as I said earlier, comprehension and cloze test. Okay, very easy two topics. तो हम लोग पहले जो है we will look into our live class schedule for today. Then we will start the revision class. So आज है 22nd of August सुबह 8 और 9 बजे हमारे डेली करंट अफेयर्स और डिफेंस अपडेट्स की क्लास हो चुकी है। एसएसबी इंटरव्यू के लिए हर रोज हमारी लाइव क्लासेस होती है। रिसेंटली हमारे अगस्त बैच का मॉक पर्सनल इंटरव्यूज चल रहे हैं। एनडीए टू 2024 के लिए देर आर करंटली 4 क्लासेस रनिंग। 11 बजे आपका करंट अफेयर्स रिविजन क्लास था, इट वॉज कंडक्टेड बाय रूबी मैम। 1 बजे था मैथ्स का रिविजन क्लास, इट वॉज कंडक्टेड बाय नवज्योति सर। 2 बजे था केमिस्ट्री रिविजन क्लास बाय शिवांगी मैम। और 5:30 बजे मेरे साथ आपके इंग्लिश का रिविजन क्लास है। सीडीएस के लिए भी देर आर 4 क्लासेस पर रिविजन। 11 बजे जीके का करंट अफेयर्स रिविजन था बाय रूबी मैम। 2 बजे था केमिस्ट्री रिविजन क्लास बाय शिवांगी मैम। 3 बजे था मैथ्स का रिविजन क्लास बाय नवज्योति सर। एंड नाउ यू हैव इंग्लिश रिविजन क्लास विथ मी। तो पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस, आप देख सकते हो द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज क्लोज टेस्ट. So in this close test, you will find some passage, but there will be some blanks. Okay, some words which are left out. So you have to read the passage first, and then you have to find out the word for the blank. That is, it's a kind of fill in the blank, but you have to complete the passage. हम लोग जैसे करते हैं, पहले हम लोग पैसेज पढ़ेंगे और उसके बाद एक एक करके हम लोग ब्लैंक के लिए आंसर्स ढूंढेंगे. ठीक है. तो पहला जो पैसेज है गाइस, एवरीवन रीड इट फास्ट and then we will start with solving the question. Okay. Between the year 1946 and the year 1955, I did not file any income tax returns. With that dash statement, Ramesh embarked on an account of his encounter with the income tax department. I originally owed rupees 20,000 in unpaid taxes. With dash and dash, the 20,000 became 60,000. The income tax department then went into action, and I learned firsthand just how much power the tax department wields. Royalties and trust funds can be dashed, automobiles may be dashed and auctioned off. Nothing belongs to the dash until the case is settled. So now everybody start answering with the first blank, first question. All of you will answer in the chat as you know already. With that dash statement, Ramesh embarked on an account of his encounter with the income tax department. किस तरह का statement था? Between the year 1946 and the year 1955, I did not file any income tax returns. Very good. The statement was blunt. Blunt मतलब straightforward, very frank, open. Right? Straightforward statement था कि मैंने कोई income tax return 1946 और 55 के बीच में फाइल नहीं किया था. So B will be the right answer with that blunt statement. Moving on to the second blank. I originally owed rupees 20,000 in unpaid taxes. With dash and dash, the 20,000 became 60,000. So second blank के लिए हमें आंसर ढूंढना है with okay, Meet is saying interest. Very good. A will be the right answer. With interest, moving on to third blank, and dash, the 20,000 became 60,000 with interest and very good. With interest and fines, क्योंकि payment नहीं किया गया था. So with interest and fines, the 20,000 became 60,000. Third blank के लिए D होगा answer. Moving to fourth blank. The income tax department then went into action, and I learned firsthand just how much power the tax department wields. Royalties and trust funds can be dash. Royalties and trust funds can be attached. Are you sure?
Royalties and trust funds can be attached. Yes, royalties and trust funds can be attached. So C will be the right answer. Very good. Moving on to the fifth blank. Automobiles may be dashed and auctioned off. Very good. Automobiles can be seized and auctioned off. Seize कर सकते थे वो और auction कर सकते थे. Seized and auctioned off. B is the right answer for fifth blank. Moving to sixth blank. Nothing belongs to the dash until the case is settled. Victim? No. Very good. Nothing belongs to the offender. Crime किया है ना, offend किया है, income tax pay नहीं किया. So nothing belongs to the offender until the case is settled. So D will be the right answer. Okay, very good. Now, moving on to the next passage, everyone, read it. Very short passage. Okay, let's read. At the time, the White House was as serene as a resort hotel out of season. The corridors were dashed in the various offices. Dash gray men on waistcoats talked to one another in low-pitched voices. The only color or color, curiously enough, was provided by President Eisenhower himself. Apparently, his dash was easily set off. He scowled when he dashed the corridors. So, 7 blank के लिए हम लोग answers ढूंढेंगे. Stalin is saying striking. The corridors were striking in the various offices. Any other answers? Hollow. Meet is saying hollow. It will be C. Empty. Resort hotel out of season. अगर आप कोई भी होटल आउट ऑफ सीजन में जाओगे तो वो खाली ही रहेगा. इसीलिए कॉरिडोर्स भी व्हाइट हाउस का खाली थे. ओके, वेर एम्प्टी. सी विल बी द राइट आंसर. हॉलो तो मतलब खोखला. आप खोखला नहीं बोलते ना कॉरिडोर्स को, तो कॉरिडोर्स को खाली बोलते हैं. चलो नेक्स्ट. एट्थ ब्लैंक. Dash gray men on waistcoats talk to one another in low-pitched voices. No worries. 8 blank के लिए आंसर क्या होगा? Dash gray men. Faded. Faded मतलब जो दिख नहीं रहा है, फेड हो गया. Stentorian. What is the meaning of stentorian? Somebody who is very loud and powerful. Yes, answer will be option A. Quiet gray men. ग्रे मैन मतलब क्या? ग्रे क्यों? क्योंकि बुढ़े हो गए हैं. क्वाइट ग्रे मैन धीरे धीरे अपने आवाज को लो पिच करके बात करते थे. तो लाउड नहीं होगा. स्टेनोटेरियन भी, सॉरी, स्टेंटोरियन भी नहीं होगा. बिकॉज स्टेंटोरियन मीन्स व्हाट? लाउड एंड पावरफुल. तो अगर लाउड और पावरफुल होते तो चिल्ला चिल्ला के बात करते. ठीक है, तो क्वाइट ग्रे. नेक्स्ट, नंबर 9. Apparently, his dash was easily set off. He scowled when he dashed the corridors. Apparently, his very good. Apparently, his temper. ठीक है, short temper थे Eisenhower साहब. So apparently, his temper was easily set off. D is the right answer. Moving to 10th blank. He scowled when he dashed the corridors. Strolled, sure. इट विल बी पेस्ट, नॉट स्ट्रोल्ड. स्ट्रोल्ड मतलब आराम से आप, मतलब क्या बोलूं मैं, मॉर्निंग वॉक की तरह आराम से टहल रहा है. ठीक है, तो वो टहलते नहीं थे, वो गुजरते थे, वो जाते थे. पेस का मतलब है नॉर्मल पेस से वॉक करके जाना. स्ट्रोल मतलब व्हेन यू आर टेकिंग अ लेजरली वॉक. ओके. स्टॉर्म मतलब जल्दी जल्दी जाना, ऑलमोस्ट लाइक रनिंग. और प्राउल हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स प्राउल. आप इंसानों के लिए प्राउल यूज नहीं कर सकते. सो ए विल बी द राइट आंसर व्हेन ही पेस्ट द कॉरिडोर्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट passage, guys. Everybody read the passage. Very easy.
Okay. Each species has its special place or habitat, and bird watcher can look at forest, meadow, lake, swamp, or field, and almost exactly what birds he find there. Birds are found all over the world. Other themselves to certain areas. Still migrate from one country to another in in search of warmth and and then return in spring The season is more favorable. अब आप 11th ब्लैंक के लिए आंसर बताइए. Okay, I could see already Meet has answered. For 11th blank, he is saying B. So very good. Right answer is B. An expert bird watcher. Very good. So 11 blank के लिए B होगा answer. An expert bird watcher. Moving to 12th blank. Can look at forest, meadow, lake, swamp or field. Yes. Can look at a forest, meadow, lake, swamp और फील्ड नॉट द. क्योंकि कोई पर्टिकुलर नहीं होता है, कोई भी. यहाँ पे तो कोई भी बोला जा रहा है ना, एनी. सो इफ वी आर यूजिंग एनी इस सेंस में, देन वी विल यूज अ, नॉट द. सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर द 12th blank. Okay, a forest, meadow, lake, swamp or field. Moving to 13th blank. And almost exactly what birds he find there. कैलकुलेट. श्योर कैलकुलेट करते हैं वो. इट विल बी ऑप्शन ए. वेरी गुड स्टालियन. प्रिडिक्ट करते हैं. कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये आ सकते हैं, ये बर्ड्स वहां आ सकते हैं. सो एंड प्रिडिक्ट 13 ब्लैंक के लिए ए होगा राइट आंसर. मूविंग ऑन टू 14 ब्लैंक. ऑलमोस्ट एग्जैक्टली व्हाट बर्ड्स ही फाइंड देयर. माइट. वेरी गुड. कौन से बर्ड्स उनको मिल सकता है उसके बारे में वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट करते हैं. सो सी इज द राइट आंसर. वेरी गुड. विल नहीं, माइट. क्योंकि प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. सो सी विल बी द राइट आंसर फॉर द 14th ब्लैंक. मूविंग टू 15th ब्लैंक. Birds are found all over the world. All birds. D is the right answer. Very good. Some birds. B is the right answer, not D. B. Some birds are found all over the world. Moving to 16th blank. Other themselves to certain areas. Very good. Others confine themselves. Okay, keep नहीं होगा. अगर इस blank के बाद to होता, to, then it could be keep to themselves. लेकिन यहाँ पे confine होगा राइट आंसर. देख, others confine themselves, खुद को वो एक जगह पे रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं. ओके, सो सी विल बी द राइट आंसर. मूविंग टू 17th ब्लैंक. स्टिल माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. फ्यू. सम. इट विल बी अदर्स. बाकी जो बचते हैं वो माइग्रेट करते हैं. कुछ बर्ड्स सारे दुनिया में मिलते हैं, कुछ अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, और बाकी जो बचते हैं अदर्स, नॉट फ्यू. क्यों फ्यू नहीं होगा? रिमेंबर द ग्रामेटिकल मिस्टेक. अगर आप सिर्फ फ्यू यूज करते हो विदाउट अ और द बिफोर दैट, इट विल मीन नथिंग, जीरो, है ना? तो स्टिल फ्यू आंसर नहीं होगा. इट विल बी स्टिल अदर्स migrate from one country to another. B will be the right answer. Moving to 18th blank. In ये आपको पता है माइग्रेशन कब होता है? वेरी गुड. इन विंटर. विंटर में ही माइग्रेट करते हैं ना. सो 18th ब्लैंक के लिए ए विल बी द राइट आंसर. बिल्कुल, इन विंटर. मूविंग टू 19th ब्लैंक. इन सर्च ऑफ वार्मथ एंड किसके लिए करते हैं वो माइग्रेट? वार्मथ के लिए और
यस, वार्मथ के लिए और खाने के लिए, इन सर्च ऑफ वार्मथ एंड फूड. सो डी इज द राइट आंसर फॉर 19th blank. Moving on to 20th blank. And then return in spring dash the season is more favorable. स्प्रिंग को वापस आते हैं, dash the season is more favorable. वेरी गुड. when the season is more favorable, जब सीजन और फेवरेबल बनता है तब वो वापस आते हैं, that is in spring. So D will be the right answer for 20. Now next passage, everybody read the passage fast. Okay. Nations which have dash programs of economic development often run into unsuspected barriers which threaten and often dash the dash needed growth of the economy. Industrialization dash productivity fails to respond, and the nation's goal of rising standard of living for its people are dash. For the 21st blank, what will be the answer? Nations which have dash programs of economic development. ए और डी. अच्छा, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, एम्बार्क. पर यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा प्रॉब्लम है, दैट इज इन द पैसेज विच आई रियलाइज नाउ. एम्बार्क के बाद यूजुअली ऑन या अपॉन प्रेपोजिशन रहता है, पर यहाँ पे नहीं है, सो मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ऑन. ओके, यस. नेशंस विच हैव डैश ऑन प्रोग्राम्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये सही होता, बट इट इज नॉट सो. बट यहाँ पे इट विल बी एम्बार्क. एम्बार्क का मतलब जिन्होंने चालू किया, some with the nations which have started with the programs of economic development. हाँ, इसीलिए मैं भी देख रही थी कि why there is no preposition. It will be on. Okay, embark on. So D will be the right answer. Moving to 22nd blank. Often run into unsuspected barriers which threaten and often dash the dash needed growth of the economy. Which threaten and often halt. Okay, it will be C, not D. Cut तो नहीं होगा. Which threaten and often halt. Halt मतलब रुकावट डाल देते हैं. Moving to 23rd blank. The dash needed growth of the economy. Yes, the right answer will be D. The desperately needed growth. या फिर अगर much होता, हम लोग बोलते हैं ना much needed, बहुत ज्यादा जरूरी है जो, तो much needed मतलब urgent growth. Something that is needed on an urgent basis, very importantly. So desperately needed growth of the economy can also be the answer, D. Moving on to 24th blank. Industrialization dash productivity fails to respond. यहाँ पे कॉमा है, ठीक है. इंडस्ट्रियलाइजेशन डैश प्रोडक्टिविटी फेल्स टू रिस्पॉन्ड. ओके, द राइट आंसर इज ए, वेरी गुड. इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉल्टर्स मतलब फेल कर जाता है. देखो, फ्लक्चुएट नहीं होगा. फ्लक्चुएट मतलब कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर जा रहा है, पर ऊपर तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि बैरियर्स ने तो रुकावट डाल दिया, तो वो नीचे ही आएगा. बट आप डिविएट नहीं बोल सकते या लोअर्स नहीं बोल सकते, है ना. इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉल्टर्स, फेल कर जाता है. सो ए विल बी द राइट आंसर. मूविंग टू 25th blank. Productivity fails to respond, and the nation's goals of rising standard of living for its people are dash. Nation's goals of rising standard of living for its people are frustrated, postpone, criticize. आंसर विल बी ऑप्शन बी, फ्रस्ट्रेटेड. सही बोले थे. फ्रस्ट्रेट हो जाने का मतलब क्या है? नीचे हो जाना, खत्म हो जाना, खराब हो जाता है. पोस्टपोन तो मतलब कि बाद में होगा, बाद में तो कब होगा वो तो हमें नहीं पता.
क्योंकि रुकावट आ चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन फेल कर चुका है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इफ अ प्लान फ्रस्ट्रेट्स इट मींस इट हैज गॉन टू द ड्रेन्स, इट इज रूइंड, खराब हो गया। सो द गोल्स ऑफ राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर इट्स पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड। ओके, सो बी विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे, विच इज कॉम्प्रीहेंशन, राइट? You have to read the passages carefully and answer the questions which will follow after the passage. Clear? चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द पैसेज, एवरीबडी रीड इट। Okay, easy passage. Let's read it together. 2 years later, in November 1895, he signed his final will. He left the bulk of his fortune, amounting to about £1,75,000, to a trust fund administered by Swedish and Norwegian trustees. The annual interest shall be awarded as prizes to those persons who during the previous year have rendered the greatest services to mankind. The interest shall be divided into 5 equal parts, now amounting to about £8,000 each, one of which shall be awarded to the person who has made the most important discovery or invention in the realm of physics, one to the person who has made the most important chemical discovery or improvement, one to the person who has made the most important physiological or medical discovery, one to the person who has produced the most outstanding work of literature, idealistic in character, and one to the person who has done the best work for the brotherhood of nations, the abolition or reduction of standing armies, as well as for the formation or popularization of peace congress. Okay, so let's start with the first question. The said prize is awarded once in 5 years, every year, once in 4 years, once in 2 years. Answers: the said prize is awarded every year, है ना, एनुअल इंटरेस्ट के अनुसार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर गो बैक टू द पैसेज, सी द एनुअल इंटरेस्ट shall be awarded as prizes. Okay, so the answer will be option B, every year. Moving to the next question, which is the prize that is referred to in the passage? कौन सा प्राइज के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है? नोबेल प्राइज, मैक्सेसे अवार्ड, पुलित्जर प्राइज, बुकर प्राइज? व्हाट डू यू थिंक? Very good. The prize that is being talked of here is Nobel Prize. So A is the right answer. Next question. The number of prizes in the field of science are, साइंस को कितने प्राइज मिल रहे हैं? 4135. वेरी गुड, 3। एक केमिस्ट्री में, एक मेडिकल डिस्कवरी में, एक फिजिक्स में, राइट? नेक्स्ट, टोटल एनुअल प्राइज मनी अमाउंट्स टू, टोटल एनुअल प्राइज मनी, very good. Right answer is 40,000. Okay, it will be D, not A, it will be D. क्योंकि 8,000 करके 5 कैटेगरीज को मिल रहा है, सो टोटल विल बी 40,000. वेरी गुड. नेक्स्ट, प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन, कौन कौन से एरिया में प्राइज मिल रहा है? वेरी गुड, ऑल दी अबव। केमिस्ट्री में भी है, लिटरेचर में भी है, फिजिक्स में भी है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पैसेज, एवरीवन रीड इट।
Okay, very easy passage. Let us read together. People very often complain that poverty is a great evil and that it is not possible to be happy unless one has a lot of money. Actually, this is not necessarily true. Even a poor man living in a small hut with none of the comforts and luxuries of life may be quite contented with his lot and achieve a measure of happiness. On the other hand, a very rich man living in a palace and enjoying everything that money can buy may still be miserable if, for example, he does not enjoy good health or his only son has taken to evil ways. Apart from this, he may have a lot of business worries which keep him on tenterhooks most of the time. There is a limit to what money can buy, and there are many things which are necessary for a man's happiness and which money cannot procure. Real happiness is a matter of the right attitude. And the capacity of being contented with whatever you have is the most important ingredient of this attitude. Very easy passage. Let us look into the questions. The phrase on tenterhooks means in a state of thoughtfulness, in a state of anxiety, in a state of sadness, in a state of forgetfulness. आप देख सकते हैं जहां पे on tenterhooks मेंशन किया गया है. This is the place. He may have a lot of business worries which keep him on tenterhooks most of the time. तो tenterhooks का मतलब क्या है? On tenterhooks. Very good. It means in a state of anxiety. B is the right answer. Next. It is true that, what is true here? Money alone can give happiness. Money always gives happiness. Money seldom gives happiness. Money alone cannot give happiness. Very good. Right answer is D. Money alone cannot give happiness. Next. A rich man's life may become miserable if he. Very good. Option A is the right answer. A rich man's life may become miserable if he has evil son, bad health, and business worries. Seldom मतलब कभी कभार. कभी कभार पैसे खुशी देते हैं, पर पैसेज में तो ऐसा नहीं बोला गया. ऐसा बोला गया कि मनी इज नॉट द ओनली थिंग दैट विल गिव यू हैप्पीनेस. राइट, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच मनी कैन नॉट बाय. सेल्डम मतलब कभी कभी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the most appropriate title to the passage? Money and contentment. Meet is saying contentment, the key of happiness. The right answer is C. Very good. Contentment, the key of happiness. मनी के बारे में नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है पैसेज में कि कंटेनमेंट के थ्रू कैसे आप हैप्पीनेस पा सकते हैं. यहाँ पे तो मनी को नेगेट किया जा रहा है. सो देयर इज नॉट मच टॉक अबाउट मनी. व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट हियर इज कंटेनमेंट. इसको प्रूफ करने के लिए लगा. ठीक है पैसेज में. चलो नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है यहाँ पे? डी. राइट आंसर इज सी. अ पुअर बट कंटेंटेड मैन कैन बी हैप्पी. ऐसा नहीं बोला जा रहा ऑलवेज हैप्पी, हमेशा हैप्पी रहेगा. नहीं, अ पुअर बट कंटेंटेड मैन कैन बी हैप्पी. हैप्पी हो सकते हैं. सी इज द राइट आंसर. चलो नेक्स्ट पैसेज. ये दो स्लाइड का पैसेज है. ये फर्स्ट स्लाइड है, इसके बाद सेकंड स्लाइड आएगा. तो पहले आप फर्स्ट स्लाइड पढ़ लीजिए, देन आई विल स्विच ऑन टू सेकंड स्लाइड.
Slide is already changed, Tally. Okay, let's read together. The problem of water pollution by pesticides can be understood only in context as part of the whole to which it belongs, the pollution of the total environment of mankind. The pollution entering our waterways comes from many sources: radioactive waste from reactors, laboratories, and hospitals, fallout from nuclear explosions, domestic waste from cities and towns, chemical waste from factories. To these is added a new kind of fallout, the chemical sprays applied to croplands and gardens, forests, and fields. Many of the chemical agents in this alarming melange initiate and augment the harmful effects of radiation. And within the groups of chemicals themselves, there are sinister and little understood interactions, transformations, and summations of effects. Ever since the chemists began to manufacture substances that nature never invented, the problem of water purification have become complex and the danger to users of water has increased. As we have seen, the production of these synthetic chemicals in large volume began in the 1940s. It has now reached such proportion that an appalling deluge of chemical pollution is daily poured into the nation's waterways. When inextricably mixed with domestic and other waste, discharged into the same water, these chemicals sometimes defy detection by the methods in ordinary use by purification plants. Most of them are so complex that they cannot be identified. In rivers, a really incredible variety of pollutants combine to produce deposits that sanitary engineers can only despairingly refer to as gunk. Okay, so now we will move into the questions. First question. All the following words means chemicals except. Very good. Except sand. Sand's chemicals nahi hota. So A is the right answer. Second, the main argument of paragraph 1 is, मतलब जो slide, first slide में जो paragraph दिखा गया था, उसका main argument क्या है? That there is sinister interaction in the use of chemicals. A. B. Okay. Right answer will be B. ठीक है. देर आर न्यूमरस रीजंस फॉर कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई. वाटर कैसे कॉन्टेमिनेट होता है उसके बारे में ज्यादातर बताया जा रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में. ओके, पेस्टिसाइड्स तो डेंजरस है ही, वो तो पूरे पैसेज में ही बताया गया, बट फर्स्ट पैराग्राफ इज फोकसिंग मोर ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड द कॉजेस बिहाइंड इट. राइट, तो बी होगा राइट आंसर. नेक्स्ट, द वर्ड गंक इन द लास्ट लाइन रेफर्स. वेरी गुड. ऑप्शन सी, टू अनआइडेंटिफाइबल केमिकल्स फाउंड इन वाटर. जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है केमिकल्स को, उनको सैनिटरी इंजीनियर्स गंक बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन कैन ओनली बी अंडरस्टूड. किस तरह वाटर पोल्यूशन को समझा जा सकता है? ये वर्ल्ड नहीं वर्ड होगा. ठीक है. In relation to the word contamination by the whole human race, in context, in relation to the number of pesticides that exist. A or D? Right answer will be A, in relation to the word contamination. Okay. Next, water contamination has become serious. कब से? Since the water pollution was difficult to assess, since nature has taken a hand in pollution, since chemists began to use new substances, since businessmen authorized the use of chemicals. Very good. Right answer will be C. Since chemists began to use new substances, तब से water contamination और भी dangerous और serious हो गया है. So E is the
राइट आंसर। चलो नेक्स्ट पैसेज। यहाँ ये भी पैसेज जो है 2 स्लाइड का है। दिस इज फर्स्ट स्लाइड, आई विल चेंज टू द सेकंड स्लाइड, एवरीबॉडी स्टार्ट रीडिंग। आई हैव चेंज द स्लाइड। Very easy passage. Let's read together. To write well, you have to be able to write clearly and logically. And you cannot do this unless you can think clearly and logically. If you cannot do this yet, you should train yourself to do it by taking particular problems and following them through, point by point, to a solution without leaving anything out and without avoiding any difficulties that you meet. At first, you find clear step by step thought very difficult. You may find that your mind is not able to concentrate. Several unconnected ideas may occur together. But practice will improve your ability to concentrate on a single idea and think about it clearly and logically. In order to increase your vocabulary and to improve your style, you should read widely and use a good dictionary to help you find the exact meanings and correct usages of words. Always remember that regular and frequent practice is necessary if you want to learn to write well. It is no good waiting until you have an inspiration before you write. Even with the most famous writers, inspiration is rare. Someone said that writing is 99% hard work and 1% inspiration. So the sooner you get into the habit of disciplining yourself to write, the better. Okay. So we will start with the question now. Very easy passage, very general passage. First question. To write well, a person must train himself in. Very good. Option C, thinking clearly and logically. Next. Initially, it is difficult to write because. D, exact usages of words are not known. Sure. The right answer will be B. Ideas occur without any sequence. Ideas के ऊपर ही हम लोग लिखते हैं ना. आप क्या लिखते हो जो आप सोच रहे हो. तो अगर unconnected ideas आए, ठीक है, एक ही idea ना आए, different kinds of ideas आ रहे हैं which are again unconnected, so you won't be able to write. So ideas occur without any sequence. Next, according to the passage, writing style can be improved by reading widely. It is option D. Very good. Writing style can be, style के बारे में बताया गया, not writing. अगर सिर्फ राइटिंग होता तो थिंकिंग लॉजिकली, बट राइटिंग स्टाइल है, तो स्टाइल हम कैसे इंप्रूव करेंगे. स्टाइल का मतलब क्या है कि कौन किस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हो, आपका टोन कैसा रहता है. तो दिस इज मोर टू डू विथ वोकेबुलरी, दिस इज मोर टू डू विथ व्हाट वर्ड्स यू आर यूजिंग. सो रीडिंग वाइडली विल हेल्प इन योर राइटिंग स्टाइल. डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, फेमस राइटर्स हैव अचीव्ड सक्सेस बाय. किस तरह उनको सक्सेस मिला. बाय डिसिप्लिनिंग देयर स्किल. ऑप्शन बी. ओके, वेरी गुड. बी इज द राइट आंसर. डिसिप्लिनिंग देयर स्किल, उनके स्किल को अच्छा बना लिया, फेमस बन गए.
Next, all the following words mean exact except. D. Very good. Erect मतलब something that is straight. So D is not the right answer. बाकी सब कुछ exact के synonym हो सकता है. चलो, अब we will move on to the next passage, and it will be the last passage, okay, for today's revision class. So everybody read it. Let us read together. Very, very easy passage. The World Health Organization is briefly called WHO. It is a specialized agency of the United Nations and was established in 1948. International health workers can be seen working in all kinds of surroundings in deserts, jungles, mountains, coconut groves, and rice fields. They help the sick to attain health and the healthy to maintain their health. This global health team assists the local health workers in stopping the spread of what are called communicable diseases like cholera. These diseases can spread from from one country to another, and so can be a threat to world health. Who assists different national health authorities not only in controlling diseases but also in preventing them altogether. Total prevention of disease is possible in a number of ways. Everyone knows how people, particularly children, are vaccinated against one disease or another. Similarly, most people are familiar with the spraying of houses with poisonous substances which kill disease carrying insects. Okay, only one slide, single slide. Chalo, moving on to the questions now. First question. It is a specialized agency of the United Nations and was established in 1948. Here, specialized means expert. Specialized का मतलब expert है. Specialized agency. B है. Sure. A है. Right answer is A. Specialized agency. An agency which is made specifically for a particular purpose, for any special purpose. Okay. So A is the right answer. Next, international health workers can be seen working in all kinds of surroundings. In deserts, jungles, mountains, coconut groves, and rice fields. Here, international means सिंपल वर्ड देखो और कितना ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है ना. Drawn from all countries of the world. B. It will be A. Belonging to the whole world. International health workers. Health workers over all the world. जो वर्ल्ड के मतलब वर्ल्ड पे जुड़े हैं सारे हेल्थ वर्कर्स के बारे में बात किया जा रहा है. इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स. ओके, नॉट दैट दे आर ड्रॉन फ्रॉम ऑल कंट्रीज. नेक्स्ट, they help the sick to attain health and the healthy to maintain their health. Here they stands for, ये तो easy है, international health workers. C is the right answer. Yes. Next, who assists different national health authorities not only in controlling diseases but also in preventing them altogether. The above sentence implies that. क्या मतलब है sentence का? Yes. Right answer is D. Who assists both in controlling diseases and in preventing them. Next, last question. Total prevention of diseases is possible
in a number of ways. The author has given illustrations of, किस चीज का एग्जाम्पल दिया ने ऑथर ने पैसेज में? मोर देन टू सच वेज। पैसेज में दो एग्जाम्पल दिया है ना उन्होंने। इट विल बी ए ओनली, नॉट सी। यहाँ पे पूछा जा रहा है द ऑथर हैज गिवन इलस्ट्रेशंस ऑफ दिस, द टोटल प्रिवेंशन इज पॉसिबल इन हाउ मेनी वेज? इन टू वेज। देखो अगर पैसेज में आप वापस जाते हो, यहाँ पे ओनली टू वेज इट हैज ही हैज गिवन। वन इज बाय गिविंग वैक्सीनेशन टू द चिल्ड्रन एंड अदर बाय स्प्रेइंग पॉइजनस सब्सटेंसेस इन द हाउस। ठीक है, तो ये दे वांटेड टू ही वांटेड टू से दैट व्हाट द पैसेज द ऑथर वांटेड टू मीन। ओके, टू सच वेज ए, राइट। अच्छा, तो ये था हमारे आज के क्लास ऑन द टू टॉपिक्स विच वी रिवाइज्ड, क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास जो है वो कल होगा, विच विल बी अ 7th क्लास। और मैं आपको अभी टॉपिक्स बता दूंगी कौन से टॉपिक्स पे रिवीजन क्लास होगा। जस्ट अ सेकेंड। टुमारो विल बी अ 7th क्लास, so we will have a revision on what classes and sentence completion। दो टॉपिक्स पे होगा। what class मतलब parts of speech and sentence completion, क्योंकि ये हमेशा से सीडीएस में आता है और एनडीए में भी आना स्टार्ट हो गया है। क्लियर? सो दिस वाज, नहीं सैटरडे को क्लास नहीं होगा, कल क्लास होगा। देन आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे बिकॉज मंडे देयर विल बी अ हॉलीडे। ठीक है, चलो guys, so that's it. I'll see you all tomorrow. You please start practicing the questions. Very easy, part of speech and sentence completion. We'll practice questions on these two topics. Okay. What class is क्यों difficult लगेगा मीत? It's part of speech. Underline word का क्या part of speech है वो बताना. It's very easy. Why is it difficult? It's not difficult. चलो, see you tomorrow.